Hi, welcome you all to the next session of Advanced Accounting. In this session, we will be dealing with the next problem, that is illustration number 2 of your page number 4.33. That is second part of chapter 4. ये second part है chapter 4 का और उसी का हम problem number second solve करने वाले. Yesterday we started with problem number 1 and we completed with that problem, but now we will be dealing with the second problem. Clear to it? Okay. From the following trial balance for the year ended 31st March 2016 and the adjustment in respect of Bhusawal Consumer Cooperative Society Limited, Bhusawal prepare the following trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2016 and a balance sheet as on that date. क्लियर? ओके. हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें इन्होंने क्या कहा है कि भुसावल कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव लिमिटेड का आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है. नाउ व्हाई दे आर आस्किंग अस टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट इन दिस प्रॉब्लम, यू विल आस्क मी दिस क्वेश्चन. वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज द नेम ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना मैंडेटरी है. अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, हमें नाम चेक करना है कि हमें कौन से कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट बनाना है. अगर वर्ड कंज्यूमर है तो ट्रेडिंग बनाना है, अगर वर्ड कंज्यूमर नहीं है तो हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग बैलेंस शीट बनानी होगी इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट लेड डाउन बाय महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. क्लियर? ओके. अभी ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों के लिए द प्रॉब्लम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का जो सिस्टम है, जो मेथड है, इज सेम. फॉर्मेट जो है वो सेम है. ओनली द डिफरेंस इन दिस इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में यू डोंट हैव टू प्रिपेयर एनी ट्रेडिंग अकाउंट, वेयर एज इन कंज्यूमर कोऑपरेटिव problem, final account problem, you have to prepare trading account. Clear? Okay. Now trial balance as on 31st March 2016. Share capital, then you have reserve fund, then you have purchases, then you have stock on 1st March 2015, carriage inward, salaries and allowances of staff, building fund, capital redemption fund, contribution to staff provident fund, sales, custom and duty, octroi, bad debts, provision for bad debts, postage, machinery at cost, traveling expenses, bonus to employee, printing and stationery, insurance, building at cost, furniture at cost, depreciation fund, sundry debtors, sundry creditors, investment in shares of credit cooperative society, investment of staff provident fund. Then we have as investment of staff provident fund, fixed deposit with RBDC bank, miscellaneous expenses, repairs to building, interest on fixed deposit, dividend received on shares, share transfer fees, profit and loss account for 14 and 15, cash in hand, cash at bank. Okay, now the adjustments. Okay, now we'll mark the adjustment. Closing stock on 31st March 2016 was 1,20,000. This is a separate adjustment. So I have circled the adjustment. Salaries unpaid on 31st March 2006 was 3,000. Unpaid salary. Unpaid salary means this is outstanding salary. Outstanding salary, to effect for the outstanding salary, ये मैं आपको बताऊंगी. पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी, स्टाफ की सैलरी जो है उस पर स्टार मार्क कर ले, सो दैट वी वाइल सॉल्विंग वी कैन ईजिली कलेक्ट दैट थिंग्स. वेयर इज सैलरी टू स्टाफ? क्लियर? ओके. नेक्स्ट वी हैव इज प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, दैट इज 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. Okay, next we have is prepaid insurance amounted to 1,500. Insurance यहाँ पर. Then we have is
later depreciation on building, furniture, machinery. Where is machinery? Then we have is transfer 1000 to education fund and 3000 to capital redemption fund from the profit of last year. ओके तो ये प्रॉफिट पे भी एडजस्टमेंट है. और फंड डिविडेंड कंट्रीब्यूशन टू रिडम्पशन फंड एंड क्या बोला है एजुकेशन फंड. वी डोंट हैव एजुकेशन फंड हियर, तो इसका एक इफेक्ट is pending. Then we have is audit fees due but unpaid. Audit fees पर है ये. Audit fees है क्या? No, we don't have audit fees. That means this is also a separate adjustment. Then we have is declared dividend. The directors declared a dividend of 5% on paid up capital. ये भी separate adjustment है. Cleared? Okay. Now we mark the adjustment. Now we will be dealing with the solution part of it. Before dealing with the solution, we have to prepare a format, that is trading account, profit and loss account and balance sheet. Trading account does not have a specific format. As usual, we deal with the trading account, but profit and loss account contains on the debit side it contains 16 heads and on the credit side it contains 5 heads. Now in consumer cooperative society, as gross profit is transferred here, that means we have 6 head here, but in consumer credit cooperative society, on the credit side of profit and loss account there are only 5 heads. Then balance sheet. Cleared? Okay. When we start the problem, so first we have to write in whose books we are making this account, and the name of this Bhusawal Consumer Cooperative Bank Limited Bhiwandi. This is given in our problem, and जैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है उसी क्वेश्चन में हमें ये नेम दिया होता है, तो हमें वहाँ से ही ये नेम लेना होता है. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो ये डेट है ये हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर की डेट है. ये हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर की डेट है जो हमें ट्रायल बैलेंस के ऊपर की मिलेगी. फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ये भी हमारे ट्रायल बैलेंस की डेट है. क्लियर? ओके. एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016, ये भी हमारे ट्रायल बैलेंस की डेट है. Cleared? Okay. Debit side is your expenses, credit side is your income, whereas in balance sheet ये side वाला liabilities and that side वाला your assets. Okay. Trading account का format तो you know. Profit and loss account का format I'll repeat. You will tell why ma'am is repeating again and again and again the same heads. My dear students, I repeat because आपको आदत हो जाए कि बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वंस यू विदाउट लुकिंग आप उसको लर्न करो, सो दैट वाइल राइटिंग यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर फर्स्ट है इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्टाफ, contribution to staff provident fund, salary and allowances of managing director, attendance fees of and traveling expenses of directors, traveling expenses of staff, rent, rates and taxes, postage, telegram and telephone charges, printing and stationery, audit fees, general expenses, bad debts or provision for bad debts. Then we have is okay. Then we have is depreciation on fixed asset, land, income and expenses, other items. Then we have on the credit side interest received, dividend received on shares, commission, miscellaneous income, in that share transfer fees, rent, rebate in interest, sale of forms, other items and gross profit. Other items की बात है land, income and expenses and gross profit brought down. ये हुआ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का. नाउ वी हैव बैलेंस शीट का. बैलेंस शीट के क्रेडिट में क्या है? कैपिटल अकाउंट, देन रिजर्व फंड एंड अदर फंड्स. देन वी हैव इज स्टाफ प्रोविडेंट फंड, secured loan, unsecured loan, deposits, current liabilities and provisions, unpaid dividend, interest accrued due but not paid, other liabilities, profit and loss account and contingency. Whereas under asset side we have is cash and bank balance, investment,
Then we have a investment of staff provident fund, land and allowances, loans and allowances, sundry debtors, current asset, plant and fixed asset, miscellaneous expenses and losses, other item, profit and loss account, and current losses. Am I clear to it? Okay, now we will deal with the problem ahead. Now we'll start with the problem. First one is share capital, that is 8 lakhs. Share capital is 8 lakhs. Share capital will move on the balance sheet, that is share capital, authorized capital हमें दिया नहीं है इसलिए नील है, अगर दिया होता तो हम यहाँ पर लिखते और 2 अंडरलाइंस ड्रॉ करते. नेक्स्ट वी हैव हियर इज इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, कितना है 8 lakhs का. नेक्स्ट वी हैव इज reserve fund. Reserve fund is 2 lakhs, and any fund or any reserves will go under second heading of your balance sheet under the liability side, that is reserve fund 2 lakhs. Why I have kept this reserve fund 2 lakhs? Because previous year का जो profit है उसका 25% हमें compulsory transfer करना होता है statutory reserves को, that means reserve fund को, and therefore I have kept it into inner column. अभी हमें previous year का profit देखना होगा और उसका 25% निकालना होगा. प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है 20,000. तो 20,000 का 25% विल बी ये 200 इंटू 25 मीन्स 5,000. तो 2,05,000 to the outer column, and this 5,000 will be less from your profit and loss account. देखो यहाँ पर लेस किया है जनरल रिजर्व. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट वी हैव इज परचेसेस 12 lakhs. परचेसेस कहाँ पर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, इनर कॉलम में. ट्रेड पर 2 परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट, इनर कॉलम 12 lakhs. लेस रिटर्न्स, अगर आया तो लेस करना है, नहीं तो अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखना है. Then we have is stock on 1st March 2 lakhs. Stock on 1st March means opening stock है ये. Stock on 1st March, that is 2 lakh. This is opening stock. Then we have is carriage inward. Carriage inward is 4,000. ये purchase expenses है तो it will go on the trading account. Carriage inward, that is 4,000. Then we have is salaries and allowances to staff, that is 1,40,000. Salaries and allowances to staff will move under the head salaries and allowances to staff under profit and loss account, expense side, inner column, salaries and allowances to staff 1,40,000. Why inner column? Because there is a star mark on this item. Star marks in the sense कि ये प्रॉब्लम में हमारे पास एडजस्टमेंट है. क्या बताया है सैलरी पर एडजस्टमेंट? सैलरी अनपेड ऑन 31st March 2016 वॉज 8,000. अनपेड सैलरी, एज आई हैव सेड, इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग. तो आउटस्टैंडिंग विल ऑलवेज बी एडेड. 1,40,000 plus 8,000 will be 1,48,000, and second effect of this 8,000 will be under the head current liabilities and provisions, unpaid salary 8,000. Clear to it? Okay. Next we have is next item we have building fund. कितना है building fund? 1,40,000. Building fund is your fund, that means it's your liability. It will move under the head, under the liability side, reserves and other funds में building fund कितना है 1,40,000. Why to the outer column? Because we don't have adjustments on building fund. Next we have is कैपिटल रिडम्पशन फंड 25,000 और उस पर एडजस्टमेंट है. लेट्स सी व्हाट इज द एडजस्टमेंट फर्स्ट. ट्रांसफर टू 3,000 टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन फंड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर 3,000. ओके, यहाँ पर कितना दिया कैपिटल रिडम्पशन फंड का 25,000. एनी फंड आई हैव सेड यू इट विल मूव ऑन द लाइबिलिटी साइड का सेकेंड शेड्यूल रिजर्व्स एंड प्रोविजंस. कैपिटल रिडम्पशन फंड इनर कॉलम 25,000 और एडजस्टमेंट में क्या बताया है उसको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से ट्रांसफर करना है 3,000. तो 25,000 प्लस 3,000 एडिशंस है तो इसलिए आउटर कॉलम में गया 28,000 एंड दिस 3,000 शुड बी लेस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट दैट इज ट्रांसफर टू रिडम्पशन फंड दैट इज लेस 3,000. क्लियर टू इट? ओके. नेक्स्ट इज
capital redemption fund, a contribution to staff provident fund, that is 10,000. It is an expenses as it is a contribution, so we have a separate under profit and loss account separate heading, that is contribution to staff provident fund, that is 10,000 directly to the outer column because we don't have any adjustments on that. Then we have is staff provident fund, that is 34,000. Staff provident fund is basically a fund and it will go under in the liability side. It will go in the liability side, the third heading, that is staff provident fund, 34,000. Then we have is the other items. Then we have the other item, staff for sales. Sales kitna hai? 16 lakhs. Sales will go in the trading account credit side, inner column 16 lakhs. अगर इनवर्ड आता है तो लेस करेंगे, नहीं तो आउटर कॉलम में वो अमाउंट लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट custom and duty, that is 4,000. Custom and duty is your trading account. It is your purchase expenses, so it will move in the trading account, that is 4,000. Cleared. Next we have is octroi. Octroi again is your trading account expenses, that is 2,000. Octroi trading account expenses, that is 2,000. Clear to it? Okay, now we'll move further with the problem in the next session. Thank you all. Thank you.